Butt. So Noor is the founder and CEO of CSIDC. Iska full form will ask Noor to add, but it's a leadership education provider for those committed for creating social change. नूर की जो मास्टर्स है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट में है, एंड शी इज आल्सो taught with Marshall Gans at Harvard University. And since then, she has designed and taught and coached and coordinated courses using organizing and public narratives and frameworks, working with 1,000 plus activists and non-profit executives, etc. The reason we wanted Noor to come onto the podcast is because the climate conversation, the climate dialogue, and the climate, overall structure within Pakistan is still quite young. And considering that Noor has worked with grassroots movements and also with executives, etc., I think she has a lot of insight to provide. Plus, I also participated in one of the workshops with that Noor led, along with her colleagues. So that we could ask a few questions about what she has seen thus far within the climate discourse in Pakistan. Hear me, then of course Dawar will continue the conversation, but just let me know as well. How are you, Noor? I'm good. Thank you for having me, you guys. This is great. Great. So let's just dive into the conversation. Or Dawar, do you have any questions? Should I start? So it's actually very nice to meet Noor as well. This is probably the first time we're talking with each other. So we were just getting to, even before the episode began, we were just chatting about how a lot of things over the time, especially in the environmental sphere, have been changing. Linkages to industry, business, everything is kind of like maturing. At the same time, everything new keeps on popping up. So I think we would just want to hear from Noor, especially she's on the leadership of Active Asia. And I know Active Asia in particular in Karachi they've been doing these training programs as well on climate advocacy and climate campaigners. So I think we can just begin from there, that what's the experience been so far, and given that in Pakistan there's enough awareness on the surface, like everyone knows that something's happening, but to really, really understand the situation, and then also after understanding, being able to communicate it to at the school level, at the college level, at the corporate level. So, what are the challenges that you've been facing? What are the sort of methods that you use, and what's been the experience so far? You're right. Okay, thank you both of you. So I think सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, so उर्दू और अंग्रेजी में मिक्स करके बात करेंगे ना हम? ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारा काम है वो है, I mean, CSIDC's theory of change is that when we are trying to create social change, कोई भी हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम पॉवर्टी एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम खवातीन के राइट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्रांस राइट्स के लिए, किसी भी इशू पे जो हम काम कर रहे हैं, तो जो हमारा काम है वो ये है कि वी वर्क थ्रू पीपल. इसके मतलब क्या है कि there's a lot of really important stuff. I used to work at the World Bank a few years ago, headquarters में, और बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग होती है कि हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, पॉलिसी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्टेट इम्प्लीमेंट करेगा उसको और उसके थ्रू चेंज आएगा. उसकी अपनी अहमियत है, इम्पोर्टेंट है, उसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं बाय डिजाइन. मगर हम लोगों का जो काम है, हम सोशल चेंज पे काम करते हैं लोगों के जरिए. इसके क्या मतलब है, that the people who are actually trying to create change, चाहे वो नॉन प्रॉफिट सेक्टर में है, पॉलिटिक्स में है, एक्टिविस्ट्स हैं, किसी भी तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ डिवोट कर दी है टू क्रिएटिंग सोशल चेंज, हम उनके थ्रू काम करते हैं. मतलब हम उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं. टीम, कैन यू हियर मी, बोथ ऑफ यू? Yes, we can hear you. Okay, great. Okay, just for the benefit of, because they don't want to our audiences don't want to listen to us, like they don't want to see our face, they'd rather see your face. Okay, great. So हमारा जो काम है वो ये है कि हम लोगों की कैपेसिटी
जिसे कहते हैं, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कैपेसिटी डेवलपमेंट करते हैं, बट विद इन दैट इट्स अ वेरी पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैपेसिटी डेवलपमेंट, जिसको फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड लीडरशिप कैपेसिटी डेवलपमेंट कहा जाता है। पर्सनली मुझे ये टर्म बिल्कुल नहीं पसंद। लीडरशिप क्या होती है, इस टर्म की हिस्ट्री है एक पूरी, न्यूलिबरल थॉट से आता है, तो आई डोंट रियली सब्सक्राइब टू दैट, बट for the lack of a better word, we have to explain our work through it. Fundamentally, CSIDC की जो trainings होती हैं, या trainings तो नहीं कहेंगे, learning experiences जो हम create करते हैं, वो दो नौयत के होते हैं। एक तो ये है कि we try to help change makers see themselves and the issue that they're working on differently. So what are some lenses through which we perceive the world जो हमें limit कर रही हैं, जिसको हम reproduce कर रहे हैं अपनी movements के अंदर, हमारे अपने biases, हमारे अपने देखने के तरीके, किससे हम बात नहीं करना चाहते। We help people identify some of those lenses and work on them. To work on different forms of internalization, मतलब internalized oppression. तो एक तो ये है जिसे decolonization भी कहा जा सकता है, internalized patriarchy भी कहा जा सकता है. So that's the first kind of stream of work that we do. The second stream of work that we do, जो Ahmed, which you were also part of, is courses that help us anchor social change discourse into the practice of organizing. ऑर्गेनाइजिंग मोबिलाइजिंग से अलग होता है, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट से भी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट के मॉडल से भी अलग होता है। ऑर्गेनाइजिंग ये होती है कि जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो लोग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लीड करें, और हम ये बात समझें कि द रीजन व्हाई सम पीपल हैव लेस पावर इज बिकॉज सम पीपल हैव डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ पावर, and through organizing we try to shift that power away from those who hold more traditional conventional forms of resources to those who perhaps are perceived to hold less. In fact, we even flip this idea of what resources itself are, because the communities we often work with have a lot of resources which are invisible in nature. तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनके साथ काम करना, उनके थ्रू पावर बनाना, और फिर उस पावर को डिप्लॉय करना, ताकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोग उसको सीरियसली लें और वो नेगोशिएशन टेबल पे आए। पाकिस्तान में मल्टीपल एग्जांपल्स रही हैं इस तरह की, कि जिसमें organizations like the Pakistan Fisher Folk Forum, amongst many others, have been able to organize communities so that वो finally वो negotiate कर सके। उनकी आवाज में एक जैसे कहते हैं ना, भारीपन आ गया, heaviness to their existence in a way within the larger discourse. तो that is what organizing is. तो हमारा जो दूसरा काम है वो है on developing organizing capacity. I'll pause here. अच्छा, before we move on to the actual organizing part of it, I wanted to ask कि आपको लगता है कि because you have a pretty unique insight into things, considering कि एक तो मोबिलाइज करना ग्रास रूट्स को वो होता है, और एक जो कहते हैं रिलेशनशिप उनके बीच में और लीडर्स के बीच में होती है. So you have a relationship, or like you're educating leaders as well, who then go ahead and organize grassroots movements. So considering कि आपकी लीडर से भी अच्छी खासी बातचीत होती है, and like you're educating, like, and from a climate perspective, do you think the climate discourse in Pakistan is as fleshed out as it might be in the global north, or compared to like other regions, or like compared to other countries in the region? And do you think यहाँ पे जरूरत है ज्यादा उधर से, यानी आपके काम की? Okay, so दो बातें. एक तो ये है कि in the nature of our work, हम ये term leader से subscribe नहीं करते. We don't think that there is a leader. हम organizing as a practice पे काम करते हैं. So leadership is understood as a practice. Organizing is understood as a practice. There is no idea of a leader. अभी कुछ महीने पहले हम लोग एक एक्शन रिसर्च डायलॉग कर रहे थे, जिसमें सिंधु बचाओ तरला के जुल्फकार आए हुए थे वहां पर, एंड आई रियली वांट टू रिपीट व्हाट ही एक्चुअली सेड, क्रेडिटिंग हिम. उनके अल्फाज हैं जो बहुत वैल्यूएबल हैं. वो कह रहे थे कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे होते हैं, या जब हम कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, जो अलग अलग तरीके से मैंने अलग पहले बताया, बट इन सम वेज इंटरलिंक्ड बिकॉज कम्युनिटी सेंटर्ड होते हैं, कि we identify some people as quote unquote leaders, but we actually don't understand कि उसका जो impact community के ऊपर आ रहा है, और
उनका उसका जो इम्पैक्ट उनकी अपनी सेल्फ परसेप्शन के ऊपर आ रहा है, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. That in fact, sometimes when we identify certain people as quote unquote leaders, we are getting in their way around the issue that they're trying to work on, or the issue that they're trying to organize around. तो जो हमारा काम है वो लीडर बनाना नहीं है. हमारा जो काम है वो है कि जो इंसान ये बेड़ा उठाए, जैसे अहमद आपने उठाया और लोगों ने, कि हम इस चीज के बारे में कुछ करना चाहते हैं, अदरवाइज वेरी होपलेस एंड डिफिकल्ट सिचुएशन जो पाकिस्तान है, कि we actually want to do something about the issues that we are facing. We work with those people so that they're more effective at creating that kind of change. So सबसे पहले तो ये clarification देना चाह रही थी before I actually answer your question about global north and global south discourse. ये भी मैं credit करना चाहूंगी. थोड़े से अरसे पहले, about a few months ago, I was talking to interviewing someone actually, and he said this, which is that the global north discourse is very much a global north discourse. It is not a global south discourse, and there is a need for a global south discourse around climate, which is very much rooted in the experience of our communities and the issues that we are facing. I don't think, I'm also personally in the camp of it. We need to not import global north discourses into a global south, but I do believe that there are certain ideas that can be taken and contextualized, which can actually be very valuable for us, such as this idea and understanding of organizing, जो कि अब हम contextualize करें पाकिस्तान के अंदर. Originally Marshall Gantz का idea है, मतलब उन्होंने इसको framework में डाला, based out of Harvard University. Does this answer your question, Ahmed? Right. Yes. Like absolutely. And I like of course, like as you know, I tend to agree that we need to not import from the global north, and of course, we can global south की अपनी जो context है, अपना perspective है, that is very valuable and very you know deep as well. So Dawar, if you have any questions, or like I'll actually move to the next one. Actually इस पे एक point है ना बड़ा important, वो ये है कि जब हम organizing करते हैं ना, तो सबसे पहला सवाल ऑर्गेनाइजिंग का होता है कि हु आर योर पीपल, आप किसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. एक्चुअली पहला सवाल ये नहीं होता कि क्या इशू है आपका, क्लाइमेट चेंज है या जेंडर राइट्स है या फलाना. पहला इशू होता है आपके लोग कौन से हैं. I'm going to very quickly interrupt over here because my next question was going to segue into the point that you're making. So why don't you tell us something about the workshops, the methods, and the practice used / taught within your workshops, which of course you were already talking about as far as identifying our people and everything's concerned. Go ahead. I would really prefer if I see your faces though on the screen while I speak, because otherwise it's like I'm speaking to myself. So just stay there. So the framework that we are trying to teach, मतलब हम multiple frameworks teach करते हैं, जिस पे focus कर रही हूँ उस वक्त, वो मार्शल से चल ये सिर्फ स्ट्रक्चरिंग है ऑफ माय लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ एज एन ऑर्गेनाइजर, जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा. विद दैट सेड, अब तकरीबन ये मल्टीपल कंट्रीज में सारे कॉन्टिनेंट्स पे पढ़ाया जा रहा है यही फ्रेमवर्क. और एक्टिव एशिया का आपने नाम लिया था दावर पहले. एक्टिव एशिया की रीजनल लीडरशिप टीम में भी मैं हूँ. हम लोग मल्टीपल कंट्रीज में काम करते हैं और पाकिस्तान में उनकी रिप्रेजेंटेटिव भी है. वी आर वर्किंग ऑन CSIDC and Active Asia working in partnership on the climate justice work in Pakistan. So this particular framework focuses on organizing, like I said. And organizing में 3 important सवाल होते हैं. सबसे पहला important सवाल होता है not what is the issue but who are my people. And जब हम कहते हैं who are my people, हम literally like कौन है वो इंसान, हम उसको imagine कर सकते हैं या नहीं. To that level of, and not hypothetical, not a hypothetical individual, but actually a population. So for example, the women who live in this particular building, really to that amount of clarity. So number one, who are my people? Second question, what is the change that they seek based on their lived experience? So the most important question for us as organizers who work on climate change is, what is the lived experience of the communities we're trying to organize? How do they understand climate change?
और यहीं पर सवालात उठ जाते हैं ना कि हम जब क्लाइमेट चेंज को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो तभी हम फँस जाते हैं। माहौलियाती तब्दीली, एनवायरमेंटल चेंज हो जाता है। एनवायरमेंटल चेंज जब आप कम्युनिटी में बात करते हैं एंड वी इंटरव्यूड 39 प्रैक्टिशनर्स ऑन दिस, बार-बार ये नज़र आ रहा था कि जब हम कम्युनिटी में माहौलियाती तब्दीली की बात करते हैं, तो वो कन्फ्लेट हो जाता है। मल्टीपल इंडिकेटर्स कन्फ्लेट हो जाते हैं। डेवलपमेंट, पुअर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस भी उसी में आ जाती हैं। किसी कॉर्पोरेट ने बहुत बड़ी पावर प्लांट लगा लिया है या कोई और इंडस्ट्री लगा ली है, उसका वो मादा फेंक रहे हैं, ज़हरीला मादा फेंक रहे हैं, वो भी उसी के अंदर आ जाएगा, एनवायरमेंटल चेंज के अंदर। सो ऑल ऑफ इट shows up. So number one, kind of poor development practices नज़र आ जाती हैं जब हम कम्युनिटी से बात करते हैं अराउंड क्लाइमेट चेंज। सीजनैलिटी चेंजेस नज़र आ जाती हैं, ठीक है? रेनफॉल, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स अभी जो हम लोगों ने देखा एक्सट्रीम फॉर्म डिजास्टर्स। तो लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द कम्युनिटी के अंदर ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज में आती हैं। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज द फर्स्ट वन इज पीपल, what is the change based on their lived experience, and third which is organizing का एक particular element जो कि development में और चीज़ों में आपको नहीं नजर आएगा, which is power, the understanding of power, कि मेरी community ये जो कर रही है, ये जो reality face कर रही है, evictions face कर रही है या plant नहीं कर पा रही क्रॉप्स अपनी, या जो भी इशू है, वो एक पावर लेंस से जब हम देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? हमें ये नज़र आता है कि द रीज़न व्हाई द कम्युनिटी इज़ सफरिंग इज़ बिकॉज़ कोई इससे बेनिफिट कर रहा है। कि किसी के हाथ में पावर ज़्यादा है जिसकी वज़ह से किसी के हाथ में पावर कम है। और फिर सवाल आता है जो अल्टीमेट ऑर्गेनाइज़िंग का सवाल होता है कि ये पावर को हम शिफ्ट करें कैसे? एक जब हम कम्युनिटी में जाके ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करते हैं, एंड अहमद यू अटेम्प्टेड सम ऑफ दिस एज़ वेल, कम्युनिटी खुद ही फ्रैगमेंटेड होती है। सबसे पहले तो कहती है आप हैं कौन? आप क्यों आ गए? First show yourself, build some trust. Then there will be a lot of fragmentation and distrust within the community of one against the other. उसको through relationships ऐसे पिरोना like a tapestry, यही बड़ा मुश्किल काम होता है, and that's the first step of organizing. And then once you begin to build what is called power with, फिर आप power को deploy करते हैं through power over tactics, show of power of the community, so that उनको ज़्यादा seriously लिया जाए on the negotiation table, या उनको स्टेट ज़्यादा सीरियसली ले एज एन एंटिटी। So, I wanted to ask, अभी आप mention कर रही हैं कि there are different experiences within different communities. अभी what are your targets? Have you assigned a particular area जहाँ पे you're trying to get those communities ready? Have you done some sort of ground level mapping where you think that the needs exist और फिर आप वहाँ जाके उनकी community और development वगैरह के अंदर में assist कर रहे हैं? Yeah, is it something that you are looking at from a demographic lens, that women in particular are more vulnerable, so they require more resources in terms of information and awareness, तो उनकी हमें वो community level पे उनको engage करना ज़्यादा ज़रूरी है. So what are the key metrics that you look into, और उस हिसाब से अभी within Pakistan what is the Pakistan की landscape, what is the scope that you are dealing with? बिल्कुल, सीएसआईडीसी का काम यहाँ पर थोड़ा मेटा है। हमारा वी आर नॉट वर्किंग ऑन ए पर्टिकुलर, वी आर नॉट फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, वी आर फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइजर्स वर्किंग विद इन कम्युनिटीज। वी आर ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजर्स, एंड व्हेन आई से ऑर्गेनाइजर्स आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजर्स, चेंज एजेंट्स, जो भी कम्युनिटी एम्पावरमेंट पे बिलीव करते हैं और क्लाइमेट जस्टिस पे काम करना चाहते हैं, वो हमारी कम्युनिटी है। उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट पे हम काम करते हैं, coaching campaigns, developing their capacity, introducing new frameworks. So Ahmed, for example, was part of a cohort of 27 kind of carefully picked uh, participants. And then वो जो 27 है ना, उसमें से एक sizable portion will go into our teaching of trainers workshop. Actually, let me backtrack. मार्शल का जो ग्लोबल नेटवर्क है उसका नाम है लीडिंग चेंज नेटवर्क। उसकी फ़ायदा ये है कि ये एक फ्रेमवर्क है जो कि वैलिड है, जो कि दुनिया भर में हेल्पफुल रहा है, और जब हम करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। एंड आई बी टीचिंग इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ग्लोबली एंड रीजनली एज़ वेल। लिमिटेशन ये है कि अंग्रेज़ी में पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि वहाँ पर हर पढ़ाने वाला अमेरिकन है, नॉट एट ऑल, एक्चुअली इट्स अ वेरी ग्लोबल ट्रेनिंग टीम। मगर
जब हम उसको इन इट प्योरेस्ट फॉर्म पेडागोजिकली पढ़ाते हैं तो वो अंग्रेजी में ज़्यादा पढ़ा जाता है। अब ऑफ कोर्स पाकिस्तान में अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स की कैपेसिटी की, तो उसको उर्दू में पढ़ाना होगा। सो ये जो पहली ट्रेनिंग थी उसमें 27 पार्टिसिपेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए, वो आए। We are hoping and we have indication that a lot of those participants would be interested in teaching. They have found it of value in their own experience and they would be interested in teaching this to their own set of organizers. And based on what the participants said to us, they also find this of value so much that they want to apply this into their own organizations, institutions, and campaigns. So through that 27, हमारी इतनी relational, I think, relationships to some extent हो गई कि this will then provide us a group of people who would want to teach this. We are also contextualizing and translating the material into Urdu, and then working with different campaigns who are part of this. जिसके जो leaders थे वो leaders नहीं, but like the heads were part of this particular cohort. They would want to take this forward. So उस TOT के लोग फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाएंगे। दैट इज आवर विजन। इस तरह से हम सक्सेस देखते हैं कि ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं, क्या वो हमारे काम में वैल्यू देखते हैं? यस। तो अगर वो देखते हैं तो फिर हमारे लिए हमारा काम वैल्यूएबल है। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा काम है ना, दैट लिव्स इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू measure it in quantifiable terms. I mean, I can give you the number 27, but it's not 27 million, right? So I used to, मैंने कहा मैं वर्ल्ड बैंक में काम करती थी जहाँ पर numbers is the name of the game. या जो मेरा MPID प्रोग्राम है उसमें हम सिर्फ डेटा करते थे, numbers is the, but जो लीडरशिप डेवलपमेंट का काम होता है या लोगों की तब्दीली का काम होता है उसमें numbers कम इम्पोर्टेंट मेरे ओपिनियन में होते हैं और डेप्थ ऑफ इंटरवेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है इम्पैक्ट को मेजर करने का इन द काइंड ऑफ वर्क दैट वी आर ट्राइंग टू डू। So, इसमें like you basically answered the question that I wanted to ask, like, why, but like I still wanted to say hash it out a little bit more. So why do you feel the need to have a training for trainers workshop in Pakistan, and especially for climate activists? Again, is the do you think that there are a lot of conversations to be had, and that the grassroots movement over here are not able to utilize the organize more appropriately? Or जो आपका जो training for trainers से, do you expect there to be a much more far-reaching impact? आई थिंक इसके लिए इम्पोर्टेंट सबसे पहले सवाल ये है कि आपका विजन क्या है, CSIDC का क्या विजन है, हम एक साल के एंड में क्या देखना चाहते हैं, जो तावर पे पूछ रहा था, आई थिंक इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे। हम ये देखना चाहते हैं कि जो लोग ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने काम में इफेक्टिव हों। सो फॉर एग्जाम्पल अहमद आपने तो किया है ना, या यासिर ने किया है, हमारे बहुत सारे कॉलीग्स हैं जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था। व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क वी इंटरव्यूड 39 practitioners and researchers who work on climate justice organizing in different kinds of capacities. और हमें बहुत सारे थ्रेड्स नजर आए। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्च तो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, मगर not to talk about any particular march, but कोई भी माइलस्टोन ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ इट लीडरशिप टीम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती, दोबारा कुछ काम साथ नहीं करना चाहती, लीडरशिप में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है। माइलस्टोन तो आपने कर लिया, एक मार्च हो गया या कोई एक चीज हो गई, कोई धरना हो गया, व्हाटएवर, बट वेयर आर यू टेकिंग इट? उसका होगा क्या? वो जो सारे लोग आए थे उसका फिर हमने क्या किया? कुछ भी नहीं ना, स्क्वांटर कर दिया अ लॉट ऑफ द टाइम। तो we saw gaps in what is called leadership, team structuring, scaling, strategizing, how tactics and strategy come together. Importantly, we saw gaps in storytelling. How is it that we're telling stories of our organizing efforts? How are we telling stories about ourselves? How are we actually being able to build hope based on the successes we have already encountered in an otherwise hopeless environment, right? So there are a lot of gaps in this is not to in any way put down efforts. This is really to laud them and appreciate them and support them. This is our way of extending support, is to how do we further strengthen these organizing efforts. So what we are seeing in a year, what would be really successful for us is people all over the country successfully being able to organize their communities or wanting to embark on that process, and us playing some little role in supporting them. So जो TOT है तो एक स्टूपिड सा जार्गनी सा टर्म है, मगर बेसिकली इसकी मतलब बस ये है कि हम किस तरीके से जो
हारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, ऑर्गेनाइज करना चाहती है अपने हारियों को, किस तरीके से मैं उसको सपोर्ट करूं वहां जाके? उनको क्या क्या हम पढ़ा सकते हैं, इवन शेयर कर सकते हैं, पढ़ाना तो बहुत बड़ा लफ्ज होता है, शेयर कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट इज वर्किंग ग्लोबली दैट दे कैन परहैप्स बेनिफिट फ्रॉम in their work based on what they have by the way said to us. It's not like मैं ये कह रही हूँ, वो खुद कह रहे हैं कि ये बेनिफिशियल है मेरे लिए. तो अच्छा, एक्चुअली उनकी लीडरशिप टीम के साथ हम क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, उसके राइट, लिए ये सारे प्रोसेसेस जरूरी हैं. ट्रांसलेट करना करिकुलम को, एक आपके पास लोकल कोहोर्ट ऑफ ट्रेनर्स जिस टीओटी के थ्रू होगा व्हाटएवर, और फिर उन लोगों के साथ कनेक्शन हो, वो हमें रीच आउट कर सकें, हम उनको रीच आउट कर सकें, सपोर्ट कर सकें इन द वर्क दैट दे आर ट्राइंग टू डू. right. So before we move on to the next question, there've been a few comments, and I guess they're from our friends and participants from the workshop as well. Ghazi Temur says that we are your people, and that he loved the workshop. And of course, and Kashmala said the very well explained, the question of power always arises in our work. And Ghazi also mentioned that he will be applying, or he has applied the framework in the work that is done, and he's looking forward to what you'll be doing in the future as well. Oh, that's तो इस exciting. इसमें Qazi, good to see you. Kashmala, good to see you both. Dawar, do you have any further questions? I was actually listening, and मुझे इससे ना I'm actually part of this leadership cohort as well. Leadership. I know Noorulain said leadership is not the thing that you want to continuously say, but they were teaching adaptive leadership, and so certain things sort of were already there in my head that we already do this stuff, but there was no name on it. Acumen, huh? acumen. So कोई खास उसके ऊपर हमने वो लेबल नहीं लगाया हुआ था. And one of the things that sort of stuck with me was they've selected us because we're already doing some sort of work. So that's obviously one of the criteria. But they constantly encourage you to think of alternatives. कि आपकी जिंदगी में अगर आप ये काम ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते. And ऑब्वियसली मेरे जहन में कुछ आ रही थी कि मैं शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता, शायद कहीं मैं गेम डेवलपमेंट वगैरह कुछ कर रहा था. बचपन के जो शौक होते हैं ऑल्टरनेटिव्स में, तो मैं ये सोच रहा था कि व्हेन यू डील विद इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स, इज इट फेयर टू से दैट ये जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या आपके स्किल पॉलिशिंग प्रोग्राम्स व्हाटएवर, आर दे आवाज कट गई दावर की, हाँ मेरे पास. You're on mute, Ahmed. You're on mute. हाँ, दावर आर दे के बाद आप गायब हो. अच्छा, अब आ रही. I'm there right now? I think I'm there. Yeah. So are they really, adding enough or taking enough from the participants and giving them the right tools in the climate sphere or leadership in general? नजर आता है क्योंकि मुझे कभी कभार फील होता है कि a lot of these programs sort of, instead of getting you more into the work, it broadens your scope a lot, but specific skills you might have needed वो खत्म हो जाते हैं या they sort of nimble down. So how do you deal with it? The participants you dealt with or trained with already, उनके क्या experiences हैं, and afterwards the program's done, how do you measure their impact? Okay. So very good question. सबसे पहले तो ये कि adaptive leadership जिसने start किया था उसका नाम है रॉन हाइफिट्स. ये भी कैनेडी स्कूल का है, मार्शल गैंस भी कैनेडी स्कूल का है, मैं भी कैनेडी स्कूल में पढ़ा है. तो रॉन के साथ मैंने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है 2012 में और फिर दोबारा अभी 2020 में. तो जो मैंने पहला काम कहा ना आपसे कि this organizing, that's like one stream of work that we do, and the other stream of work which is around helping people reflect at their own lenses or perceiving things slightly differently. इसमें हम adaptive leadership का framework use करते हैं, but a slightly more advanced, for the lack of a better word, aspect of that. So yeah, so I'm quite familiar with what you are saying. Leadership development work की क्या efficacy है? मेरा तो पूरी लाइफ अब तो तकरीबन समझे एक डेकेड से कर रही हूँ मैं. एंड आई थिंक इट रियली डिपेंड्स ऑन आपको अपनी जिंदगी में क्या चॉइसेस लेनी है और आपको किस चीज में वैल्यू नजर आती है.
मुझे वैल्यू नज़र आती है जब किसी इंसान के अपने अंदर चेंज आ जाता है और वो बहुत इफ़ेक्टिवली उस चीज़ को करने लगता है जो वो पहले नहीं कर पाता था या कर पाती थी। या कोई इंसान समझता था कि ये मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, मगर वो उसको नॉर्मलाइज़ करके शेयर्ड एक्सपीरियंस उसको फ़ील हो जाता है कि एक्चुअली मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ इन माय स्ट्रगल। मेरे साथ और लोग खड़े हुए हैं। हम अकेले नहीं हैं। हम वी आर नॉट नट्स, दैट हम लोग क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर काम करते हैं। पर्सनली मेरे लिए तो यही बहुत होता है। लाइक आई फील अ ग्रेट अमाउंट ऑफ जॉय। अपने बच्चे के साथ जो टाइम नहीं स्पेंड कर रही, लाइक द कॉस्ट आई एम पेइंग इन माय ओन लाइफ फॉर इट, I feel pretty satisfied. Okay, the people who are really working their themselves to the bone, right, are feeling a sense of community and being held. For me, that's really valuable. Um, I think what's also really valuable for me is that when people start perceiving their own limitations, वरना होता क्या है कि जो हमारी सोच, and this I've seen over and over again, sometimes through my own personal failure, कि जो हमारी अपनी पर्सनल लिमिटेशंस होती है ना, वो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशन बना देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की हमारे कैंपेन के अंदर वही चीज़ नज़र आ रही है जो हम खुद हैं। क्योंकि हम खुद नहीं सुन सकते, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं सुन सकती। एंड आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट आई हैव सीन दिस वेरी क्लोजली इन पाकिस्तानी सेटिंग्स कि जो हमारे अपने लेंसेज़ हैं ना देखने के, हम उससे टाइटली वेड हो जाते हैं कि हमें कोई और अल्टरनेट रियलिटी नहीं नज़र आती, जो कि हमारी अपनी ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट्स की डाउनफॉल हो जाती है। तो फॉर मी इस तरह की रियलाइजेशन होना एक वैल्यूएबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ और टाइम होता है। Not to say that there are other things which are not important, they're also equally important. But for me, the question is education important? Are we really truly, because I don't see us as doing trainings actually or workshops. We are creating educational experiences. So when I see the education of the mind as being an important effort, then I see that the work that we do is valuable, and that gives me a lot of joy. So okay, But so Dawar, I also want to say one thing very clearly about this is कि पाकिस्तान में जो लीडरशिप डेवलपमेंट का काम होता है ना, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो जब हम इस तरह की चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम उसकी एक्सेप्शनल क्वालिटी लेके आएँ। बिकॉज़ आई कुड बी डूइंग मेनी अदर थिंग्स, बट आई थिंक इन सम वे आई फील फेयरली कॉन्फिडेंट कि जो वी आर डूइंग आवर वेरी 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 बेस्ट, कि हम क्वालिटी हमारी बहुत ही एक्सीलेंट हो। And the kind of time that we are asking people to invest and the time that we are personally investing in this process produces some changed kind of results. One more thing, Ahmed. I know that you want to jump in, but one more last thing. I want to say one last thing to your question. In the organizing training that Ahmed did, the whole training is about 5 practices. So you can actually point to specifics of doing things differently. So Ahmed, you want to probably share, I'm going to throw this to you. If you could probably share the relationships wala jo tumhara insight tha, jo tumne workshop mein share kiya tha, that would really concretize this, and then we can move on to the next question. I was actually going to ask you to do that, like not my specific example, but like if you've within the workshop, because you talked about creating change within somebody, बिल्कुल जो सही कहते है. हैं उन्हीं के उसमें अगर हो, तो have you seen any change, or what did you get some insight that like that you noticed कि उसके पास पहले नहीं था, पर उसके जो कहते हैं जो पार्टिसिपेंट था उसके पास बाद बिल्कुल में सही आया. है. हमारे पास एक तो पार्टिसिपेंट था, उसका नाम था अहमद शब्बर. वो हमारी ट्रेनिंग. So Ahmed basically made a very decent point. Actually, there are 2 points which really stuck out for me for our workshop. एक अहमद का पॉइंट था, हम लोग का एक मॉड्यूल होता है ऑन रिलेशनशिप्स, के रिलेशनशिप्स जो है ना उसके थ्रू पावर बिल्ड होता है. जब हम कहते हैं ना कि पावर, वी आर बिल्डिंग पावर इन द कम्युनिटी, व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन इज यू आर बिल्डिंग ट्रस्ट बेस्ड सस्टेनेबल रिलेशनशिप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसके मतलब होता है. तो अहमद का इंसाइट था कि for the longest time I've been hearing about relationships being important, relationships, but nobody ever told us कि जब आप एक relationship one on one करते हैं, तो उसके क्या 5 steps हो सकते हैं. What are the 5 things to think about when I'm doing a one on one, so that I can mentally pattern myself or at least do some sort of checklist कि अच्छा यार मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, अच्छा मैं यहाँ अटक जाता हूँ, क्यों मैं क्यों अटक जाता हूँ यहाँ, something concrete for me to take away. So I think that was a big one. And then I think the second one was I'm forgetting the person's name, his face is coming into my mind.
where at the very end of the workshop, someone said, what was the best I was asking, what is the key takeaway? And he said, my biggest key takeaway is that we are all here together. That we're all here together. So he had been feeling for a long time कि यार मैं अकेला हूँ, मैं अकेले कर रहा हूँ. I'm the only nutcase who like, I'm the only person who thinks like this. But suddenly he felt like, no, there are like 27 of us who actually think like this, and that's really great. So it made him feel some level of concreteness and cognizance. And one, I think also norming, हम लोग leadership teams के shared purpose की बात करते हैं कि how do you actually build a leadership team? ये starting होती है organizing में. And then we have like a half an hour maybe exercise that allows people to build a shared purpose for their campaign. So within half an hour, you actually emerge with a concrete shared purpose. It's a work in progress. You can come back to it over and over, but there's something concrete for you to begin to work on, which organizers like Ahmed would tell you sometimes takes months of just bickering or फिर भी कुछ नहीं होता. So some kind of concrete things like that. Back to you, Ahmed. अच्छा, like I'm very sorry, like मुझे जो कहते हैं बार-बार याद करना पड़ता है, that's why like that's actually one of my issues as well. But you mentioned आपका जो कहते हैं how coaching works was like observing, diagnosing, and then intervening, debriefing, and then monitoring progress. Would you like to elaborate on that a little bit as well? और मेरा जो like I believe like if you're talking about that thing, like on how to listen to somebody. That was the the process that you guys effectively broke down for me. Like I don't remember the exact words के क्या क्या वो थे, मगर उसमें मेरे ख्याल से वही था कि of course हर कोई कहता तो रहता है कि किस तरीके से एक दूसरे से बातचीत करनी है, किस तरीके से एक दूसरे को सुनना है, but और या ये नहीं कि किस तरीके से सुनना है, हर कोई ये कहता है कि सुनना चाहिए एक दूसरे को. Everybody should hear before they act. But like I can actually vouch for the workshop that they effectively broke down on how to actually do the listening. उसमें जो है शुरू में of course एक दूसरे को जानना, then explore करना, उसके बाद then like asking questions. So it was pretty interesting. I don't remember the exact words for those 5. So if you remember those words as well, please do what's it called, mention them. उसके अलावा जो observing, diagnosing, intervening, debriefing और monitoring, इस पे अगर आप जरा सा वो नहीं कहते हैं इन चीज 5 आपके जो लीडरशिप एजुकेशन के हवाले से उसको जरा सा एलैबोरेट कर सके, and then we'll be reaching the end of our conversation either way. Okay. So I'll ask if Dawar has any further questions or if you have any comments. Okay, so one thing, which is what do you listen for when you're listening to someone? You listen for 2 things. You listen for values. Who are they? What are their values? And where are their values coming from? The second one is you listen for their interests. Usually, depending on which kind of organizing camp you come from, one of them will be a bad word. जो values वाले होते हैं वो कहते हैं यार interest is a bad thing. नहीं interest नहीं होने चाहिए. हम सब अच्छे लोग हैं, हम अच्छा काम करेंगे. But interest is bad. और जो interest वाले होते हैं वो कहते हैं ये क्या fluffy बातें हो रही हैं, values ये क्या है. But actually, if you think about it, whenever we're making a choice, because organizing is a choice, right? You're inviting people to choose to act in the face of a sometimes insurmountable problem. तो उसके बहुत सारे हिस्से हैं, ये तो मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रही हूँ, मगर एक चीज ये है कि you're listening for their values. Who are they? How were their values formed? And really like getting to know people and really being kind of honest about who you are also, how your values got formed, but also then being open and straight about interests. कि हम क्या चाहते हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन से हम क्या चाहते हैं, तो इसके थ्रू ही हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे ना, या तो हमारे इंटरेस्ट अलाइंड होंगे या अपोज्ड होंगे, ठीक है. इसके बारे में कुछ किया जा सकता है. सो दैट्स नंबर 1. नंबर 2, ये जो सेकंड तुमने Ahmed that you kind of spoke about is something called coaching. So the most kind of the central aspect of Marshall Ganz's framework of organizing is coaching. And why is it coaching? Is because we believe that for something to be a successful organizing effort, it has to, again, by the way, it goes to Dawar to one of your earlier questions, it has to achieve 3 indicators. It has to create some bigger picture change. Okay, so you can think about a real organizing example अपने ज़हन में, कोई bigger picture change करे, मगर इसके साथ साथ organization बनाए, team हो, कोई
ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी, जरूरी नहीं कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द नॉन प्रॉफिट व्हाटएवर, बट एक्चुअली कोई एक स्टेबल बाउंडेड पर्पसफुल टीम हो जो कि स्केल करना चाहती हो, बढ़ना चाहती हो, एक स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन, so big picture change, organization. And the third one, which is every person who comes into the organizing movement is developing in their quote unquote leadership. वो बेहतर से बेहतर काम कर पा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हो. By the way, leadership, the way that we define it is accepting responsibility for achieving shared purpose under conditions of uncertainty. So it's a practice. So वो उनकी जो practice है वो enhance हो रही है over a period of time. तो ये तीनों चीजें अगर meet हो, big picture change, organization, leadership development of individuals, तब एक organizing campaign successful होती है. तो जब हमें leadership development आपने इंडिकेटर बना दिया, इसके मतलब ये है कि लोगों की जो बढ़ाने का, उनकी जो स्किल्स बढ़ाने का कोई तरीका भी होगा, उसके लिए कोचिंग इज अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, पर्टिकुलरली व्हेन थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड चेंजिंग. ऑर्गेनाइजिंग की कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, तो लोगों की कैपेसिटीज बढ़ा के ही होगा ना वो काम. तो इसके लिए कोचिंग एक इम्पॉर्टेंट तरीका होता है, और वो कोचिंग इस तरह से होती है कि फर्स्ट यू लिसन, यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, यू आस्क क्वेश्चंस, you pause and advise. Nobody wants to hear like the extremely smart ideas you have for a second. And then you actually ask them good questions so that the truth begins to dawn from within their own experience. Simplest way of explaining coaching, I think. It's a little bit more sophisticated than that, but I just simplified it for us here. I think यहाँ पे, since we have a specific agenda in mind as well, so climate change leadership, Pakistan ki, you've already mentioned how like they get disjointed. This face similar problems as every other marches or organizers face. उनके भी वही मसले हैं. But if you were to advise someone who is in the climate change affair, if there's one thing that is really important, or if this is like a bunch of 2-3 things that you would want to list down, what would be those things? कि क्या करना चाहिए to get this movement started? Because if you're talking about gender, if you're talking about political movements, if you're talking about workers movements, those have existed थोड़े अरसे से, वो पुरानी हो गई हैं, उनकी कई जगहों पे मेच्योरिटी है. बट इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, माहौल, हमारे यहाँ मुख्तलिफ इशूज़ को, चाहे वो फिशरीज़ के इशूज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के इशूज़ हैं, उनकी स्पेसिफिक मूवमेंट ज़रूर होंगे, लेकिन वो एक ओवर आर्चिंग माहौलियाती मूवमेंट उस तरह से अभी तक नहीं बन सकी. तो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए आपकी क्या टिप्स होंगी? एंड आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. ये बहुत अच्छा सवाल है और मुश्किल सवाल है, और मैं इसका एक अच्छा आंसर नहीं दे सकती ना. I mean, I don't really believe in that. मैं बताती हूँ आपको, I'm not that kind of person. But here's a little bit that I have learned. कि अगर हम देखें दुनिया भर में कौन सी मूवमेंट सक्सेसफुल हुई हैं, वो मूवमेंट्स हैं जो कि रूटेड हैं लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस में. और आपकी जो आप कह रहे हैं ना, जैसे फिशरीज की मूवमेंट है, एक अरसे से है यहाँ पर, तो जो मूवमेंट्स जो मैच्योर मूवमेंट्स नहीं मैच्योर हो गई, मतलब आई वुडंट से दैट, बट जो आइडियाज मैच्योर हैं एक सोसाइटी में, जो आइडियाज मैच्योर हैं, जो मैं थोड़ा बहुत समझी हूँ, वो ये कि उन आइडियाज के साथ रिलेशनशिप बनाना अहम है अगर आपको एक्चुअली ग्रास रूट्स की बात करनी है. तो अगर आपको ग्रास रूट्स की बात करनी है तो आपको ग्रास रूट्स की जबान में बात करनी है. नॉट दैट हम कोई ट्रांसलेशन कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम भी तो ग्रास रूट्स हैं, हम भी तो उसी का हिस्सा हैं, मतलब हम भी वही है ना. तो उसी में रहे हैं तो बेहतर है हमारे लिए कि हम we really land ourselves in the lived reality of what quote unquote climate change looks like. और पाकिस्तान में जो मैं समझ रही हूँ, जो मेरे इंटरव्यू से मुझे अंदाजा हुआ है, seasonality, temperature, disaster and bad development. ये कम्युनिटीज कहती हैं कि ये हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस है माहौलियाती तब्दीली का. तो हमें अपने डिस्कोर्स को भी उसी के अराउंड, अपनी एफर्ट्स को भी उसी के अराउंड ही सोचना चाहिए. मेरा ये ख्याल है. एंड आई थिंक द क्वेश्चन एज एन ऑर्गेनाइजर ऑलवेज बिगिंस विद हु आर माय पीपल. हमें किसको ऑर्गेनाइज करना है. इट्स डिफरेंट फ्रॉम एडवोकेसी कि मैं मीडिया पे आ जाऊं, मैं 6 लोगों को कह दूं, उसका क्या फायदा होगा, राइट? लाइक एक्चुअली कम्युनिटी के साथ काम करना, उनके साथ रहना, आई थिंक उसमें बहुत पावर भी है, और सच्ची बात है कि सोल भी आपकी फ्यूल्ड रहती है. Great.
Thank you for your insight, Noor. And I guess like that's all the time that we had right now. But like of course, there's a lot more to unpack over here, and a lot more, work to be done as well. So, वैसे तो hopefully within the context of the podcast, we'll bring you on again to have to like have a more detailed conversation. But uske alawa bhi outside of the podcast and everything as well, inshallah we keep working together. And I have a lot, I have to pick your brain a lot more than what I've already done. So, but yeah, as far as our audience is concerned, I would appreciate it if you could like, share, and retweet and subscribe and all of those things as well. Or follow Noor as well on Twitter and other spaces. You'll find all the details on our Facebook page, on YouTube, and on our Twitter. I'm very bad at all this stuff. I'm not on Twitter. I'm really bad on Facebook. I'm not a social media person. So if you are interested in figuring out CSIDC क्या करता है, आप CSIDC के LinkedIn page को subscribe कर सकते हैं. इसके अलावा there's probably no other way to reach me. There you go. So Very through all hidden. of those, then you can probably reach the LinkedIn and everything. LinkedIn सबसे सही है. LinkedIn पे पहुंच जाएंगे. सही. So thank you once again, Dawar, and thank you, Noor, for coming on. Dawar, do you have any further questions, or perhaps we could azan bhi ho rahi hai. So I guess we will end the conversation over here and eventually have another conversation again next week. Thank you. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Thank you, both of you. God bless. Take care. Thank you once again for everyone over here. Dawar and I will continue bringing more and more people, inshallah, to talk about the environment. The next two topics are, of course, on smog and air quality and several other issues. So please like, share, and subscribe, and retweet. Thank you once again.